Hello students, today we will discuss some important topic of this chapter. The first one is discovery of neutron. So discovery of neutron is done by James Chadwick in 1932. How this discovery of the neutron happens? The James Chadwick done the bombardment of alpha particle. These are the alpha particle, okay, on the beryllium, okay, on what the alpha particle bombardment on the beryllium, okay, and he found that is dissociate into the carbon and the one another particle, okay, which is mass equal to the proton. So you can see 9 plus 4 is equal to 13. So there is carbon which has mass 12. So there will be another particle which has mass 1. Okay. So neutron is what? Neutron is also a subatomic particle which has mass 1.675 into 10 to the power minus 27 kilogram, equal to that of hydrogen atom, and carrying no electric charge, means it has no charge. So it is called neutrons. So there are three subatomic particles present in atom: proton, neutron and electron. Proton plus neutron found in where? Nucleus, and electrons were around the nucleus. Okay, so proton and neutron called nucleons, and the mass of an atom is due to what? Due to proton and neutron. So we can say that the mass of atom is the mass of the nucleon. So mass of electron is negligible as compared to the mass of proton and mass of neutron. So already we discussed that mass of electron is around 1 upon 1837 times of the mass of proton. Okay, so now these are the mass, relative mass, approx mass, charge and the relative charge of the electron, proton and neutron, which we have discussed earlier. Okay, you can see again here, and you can relate to each other them. Then next topic is mass number and atomic number. So mass number, so firstly we will discuss the atomic number. Atomic number is denoted by Z. Atomic number is denoted by Z. And what is this? Okay, atomic number is mass of proton, and for a neutral species is equal to mass of electron. Means atomic number में mass of proton पे depend करता है, और mass of proton and electron equal रहेगा for neutral species के लिए. Okay, and mass number is denoted by A. It is mass of proton plus mass of neutron. So we can say number of proton is equal to Z, number of electron is equal to Z, means atomic number, and the mass of neutron is equal to A minus Z. A is what? A is the mass number, and the Z is what? Atomic number. So there is example to understand this. Lithium has, we know that lithium has atomic number 3, so Z is equal to 3 and A is equal to 7. So we can write lithium like this: 3 is the atomic number and 7 is the atomic mass. So 3 is the number of proton and number of electron, and 7 is the mass number. So we can calculate the mass of neutron from this. Therefore proton is equal to 3, electron is equal to 3, and number of neutron is A minus Z is equal to 4. So there is lithium contain 4 neutrons. So representation of an atom, a symbol of an atom like X is an element, and A is the mass number and Z is the atomic number. So like lithium, we can write lithium is 3 Li 7. Okay, understood? Now the next topic is isotopes, isobars and isotones. So what are the isotopes? You know very well about the isotopes, the atoms of same element. Okay, it is important, the atoms of same element which have the same atomic number but different atomic mass number are called isotopes. तो इनका atomic number same रहेगा but इनका atomic mass number different रहेगा. These are the atoms of same element. जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, these are three atoms of same element of hydrogen. Okay, these are the isotopes of hydrogen. 1H1 is called protium, 1H2 is called deuterium, and 1H3 is called tritium. So chlorine has two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. Nitrogen has two isotopes, carbon has three isotopes, carbon 12, 13, 14. Similarly sulfur has four isotopes, oxygen has three isotopes, and the number 6 uranium has also three isotopes. Okay, so you can see here uranium 92, 92, the atomic number is same but the atomic mass number 235, 238 and 239 are different. Okay, all the isotopes of a given element will show almost some सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सेम रहेगी. नाउ द अगेन इज आइसोबार्स. Isobars, atoms of different elements. These are not of same element, these are of different elements having same mass number but different atomic number. इसमें atomic number different रहेगा, atomic mass same हो जाएगा, just opposite of the isotopes. तो number of protons and number of neutrons in the nucleus of each atom is the same. A same means number of protons and neutrons same रहेगा. Okay, so example है यहाँ पर ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम.
all three are isobars. कैसे? Let's check the atomic mass number of those 40, 40 and 40. So if we can say atomic mass number is same of these three, but atomic number is different, 18, 19 and 20. So these are called isobars. Isobars are atoms of different elements and hence they have different properties. ये atom different elements के हैं और we know that different elements है तो इनकी properties भी क्या रहेगी, different रहेगी. Next है isotones. Isotones, what are the isotones? Atoms having same number of neutrons, जिनमें atom neutrons, ऐसे atoms जिनमें neutrons का number same होगा. Atoms having same number of neutrons but different mass number are called isotones. Thus isotones have same number of neutrons. These atoms differ in mass number as well as in atomic number. इनका atomic number भी different रहेगा और इनका mass number भी different रहेगा, but number of neutrons same रहेगा. Let us check it. That is silicon, that is phosphorus, that is sulfur. Okay, check their mass number 30, 31, 32 different, and atomic number 14, 15 and 16 also different. But when we calculate the number of protons, 13 minus 14, 31 minus 15 and 32 minus 16, there will be always 16 neutron, 16 neutron and 16 neutron. Okay, number of proton different है 14, 15, 16, but number of neutron same है, इनको बोलेंगे isotones. Here is another example, you can also check it. Now the next one is isoelectronic atoms or ions. Okay, these species or atoms or ions containing same number of electrons. Isoelectronic बोला गया means इनमें number of electrons same रहेगा. Check करते हैं. O has -2 charge, F -1, Na +1, Mg +2, L +3 and Ne. You can check these all have 10 electrons. The number of electrons are same in all of these, so we can say these are isoelectronic species. There is a question number 1. हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियाई. तो चेक करो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है. सिमिलरली मैग्नीशियम, सिमिलरली Br. ओके, तो चेक करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 7, 18. सो वी कैन से प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 बिकॉज एटॉमिक नंबर 8 है, एंड द न्यूट्रॉन 17 minus 8 is equal to 9. मैग्नीशियम 12 protons, 12 electrons, and 25 minus 12 is 13. 13 is the number of neutrons. And again Br 80, 35. So 35 are the proton and electrons, and 45. 80 minus 35. Okay, A minus Z. 80 minus 35 is equal to 45. So इसमें जो number of electrons रहेगा वो रहेगा बेटा, sorry, number of neutrons is 45. Now the next one, there are some questions, you can solve them and you can understand the concept. Number of electron, proton and neutron in a species are 18, 16 and 16. Assign the symbol for species. So we can check number of protons and electrons are 16, 16. So we can write here the X element which contain proton 16 and the proton 16 and the number of neutron in species are 16, 16. So number of neutron be 16 and number of proton be 16. So proton 16 means atomic number 16, but number of electrons are 18. It means there are 2 more electrons as compared to the proton. So we can say it gains 2 electrons. So 16 plus 2 electrons का number क्या हो जाएगा 16 और 2 electrons extra है, it means 18 है. Okay, so 18. 16 number पे कौन सा element होता है बेटा, sulfur. So we can write sulfur, we can write here there is sulfur, it is 16 and number of electron is 18. So we can assign here -2 charge because it contain 18 electrons and the number of the neutrons is 16. So 16 plus 16 is 32. Mass number कितना हो जाएगा बेटा इसका 32. So this is the symbol of that element, okay, that ion. Question number 3, calculate the mass and charge of 1 mole of electron. 1 mole of electron का charge and mass कितना रहेगा. तो mass of 1 electron, we know that the mass of 1 electron is 9.1 into 10 to the minus 31 kg. So mass of 1 mole means how many numbers, there is 6.022 into 10 to the power 23. So we can multiply the mass of 1 electron to the mass of these 6.022 into 10 to the power 23 electrons. So that will be 5.486 into 10 to the minus 7 kilogram. Charge on 1 electron is this, and you can calculate the charge of 1 mole by multiplying this value to the 6.022 into 10 to the power 23. It will be 9.647 into 10 to the power 4 coulomb. So these are the important questions. Next, and again question number 4, calculate the number of electron which will together weight 1 gram. कैसे? Mass of 1 electron is 9.11 into 10 to the minus 31 kilogram. It is the mass of 1 electron. So this is the mass of 1 electron. So we have to calculate the mass of 1 gram, or we can write here
10 to the minus 3 kilogram. So 10 to the minus 3 multiplied by 1, it means we can divide 10 to the minus 3 by 9.1 into 10 to the minus 31, so we can found 1.098 into 10 to the power 27 electrons. That is a simple mathematics, so you can use simple mathematics to solve this question. So this is the 1 gram, this is the this is the number of electron will together weight 1 gram, ये number है, ठीक है. Okay, next है development leading to the Bohr's model of atom. So after the Thomson model, after the Rutherford model, next model will be the Bohr's model. But there are some basic things बिफोर द स्टडी ऑफ बोर्स मॉडल कि बोर मॉडल का जो ओरिजिन है, बोर मॉडल का जो डिस्कवरी है वो किस पे बेस्ड है. सो देर आर टू थिंग्स on which Bohr model is based. There is the dual nature of electromagnetic radiations, and the number two is atomic spectra. So we will discuss one by one. First thing is dual nature of electromagnetic radiation. अब dual nature कौन कौन से? First is wave nature and second is particle nature. Okay, so first we will discuss the wave nature of electromagnetic radiation. Okay, electromagnetic radiation has dual nature, particle as well as the wave nature. So we will discuss first wave nature. In 1870, the scientist James Clerk Maxwell, okay, it is very important name, James Clerk Maxwell, proposed that light and other forms of radiant energy, जो भी light और other forms of radiant energy है वो propagate करती है through the space in the form of waves. वो space में waves की form में प्रोपोगेट करती है. दीज वेव्स आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम. इनके साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होता है. सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. जो भी रेडिएंट एनर्जी है, ओके, लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो प्रोपोगेट करती है किसमें, स्पेस में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. सो दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations or EM waves. Okay, light is also a electromagnetic radiation. Initially Newton के time पे it was believed that the light is made up of particles, but after that we will discuss what happened. Maxwell ने क्या कहा, that Maxwell proposed that if when charged particle accelerate, then alternate electric and magnetic fields are produced. जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करता, सेम स्पीड से मूव नहीं करता है, एक्सेलरेशन होता है उसमें, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, और कैसे प्रोड्यूस होता है आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इस डायग्राम से. ओके, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज डायरेक्शन प्रोपोगेशन, और एक आपके पास ये ऑसिलेशन है और एक आपके पास इस वे में ऑक्सीलेशन है. Okay, so you can see that the fields produced by oscillating charged particle are perpendicular to each other. आप चेक कर सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ब्लू लाइन में, इट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड द रेड लाइन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है. दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सपोज आपकी जो वेव है वो कोई चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इस तरह से, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इस तरह से है. सो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस डायग्राम से, इजीली आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड, डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ ऑल EM वेव्स ट्रैवल विथ सेम स्पीड. कहाँ पर, वैक्यूम में. कौन सी स्पीड से, लाइट ऑफ स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करती है. ओके, so there is a formula, c is equal to nu lambda. Nu is frequency and lambda is the wavelength, so it is very important formula. C is equal to nu lambda. So we can write also nu is equal to, nu means frequency is equal to c upon lambda, and this is very important formula, इसको हमेशा याद रखना है. Nu is equal to c upon lambda. There are many types of these electromagnetic radiations not require any medium for propagation. उनके लिए कोई medium की requirement नहीं है. So you can understand this by the sunlight from the sun comes from the sun to the earth. Okay, and there is space, there is no environment, there is no medium, so sunlight does not require the medium. So the same electromagnetic radiations not require any medium. So these are very important lines. There are many types of electromagnetic radiations which differ from one another. There are many type of electromagnetic radiations in wavelength और frequency, उनका अलग अलग रहेगा. This constituent is called electromagnetic spectrum. Okay, spectrum में पढ़ेंगे क्या होता है. The complete range of electromagnetic waves is called electromagnetic spectrum, जिसमें सारी electromagnetic waves आ जाएंगी. Arrange, तो क्या होता है एक्चुअल में electromagnetic spectrum? It is arrangement of the
is the arrangement in order of increasing lambda. Lambda means wavelength or decreasing the frequency. Okay, so उसके उस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, दैट टाइम वी विल फाइंड दी स्पेक्ट्रम. अब ये आपके सामने डायग्राम है स्पेक्ट्रम का. ओके, मैं आपको चेक करा देता हूँ. स्टार्ट करेंगे हम. फर्स्ट जो रेज है आपकी, दैट इज दी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट. ओके, आई आर इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, FM, AM, दीज आर द रेडियो वेव्स एंड देन लॉन्ग रेडियो वेव्स. आप चेक करोगे यहाँ पर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, वो 10⁻24, 22, 20, 18, 16 ऐसे करके 10⁻2 एंड 0. ओके, यहाँ तक आ गई, मीन्स डिक्रीजिंग है. तो ये जो ऑर्डर है, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. और व्हेन सेम, ये तो ऑपोजिट रहेगा वेवलेंथ का ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इस साइड है, तो आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा. यू कैन चेक -16, -14, -12 और यहाँ पर 8 है, प्लस में 8 है. मीन्स वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स वी कैन से द रेज विच हैव हाई फ्रीक्वेंसी कंसिस्ट द लो वेवलेंथ. ओके, और यहाँ पर एक रीजन ऐसा है, द रीजन विच कैन सी बाई आवर आईज, इट इज कॉल्ड विजिबल रीजन. जो हमको कलर दिखाई देते हैं, टोटल कलर, वो सारे विजिबल रीजन से रिलेट करते हैं. और ये विजिबल रीजन एक छोटा सा पार्ट है पूरे स्पेक्ट्रम का. दैट इज ये यहाँ पर ये जो पार्ट है छोटा सा, ये पार्ट है आपका स्पेक्ट्रम. ये बिटवीन यूवी एंड द आईआर. ओके, हम आईआर को नहीं देख सकते, हम यूवी को नहीं, एक्सरेज को हम अपनी आई से सीन नहीं कर सकते, बट हम डिफरेंट कलर को अपनी आई से देख सकते हैं. दैट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम. ओके, और ये कहाँ से इसका रेंज क्या है बेटा? इसका रेंज है 400 से 700. ओके, किस में है? एनएम में. 400 to 700, 750 एनएम तक होता है. ओके, सो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बना रखे हैं. दैट इज डिफरेंट रीजन इन स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स. उनके अलग अलग नेम है. रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन है, जो कि अराउंड 10⁻6 हर्ट्ज के अराउंड में है, और उसका यूज़ होता है ब्रॉडकास्टिंग में. अगेन माइक्रोवेव रीजन 10⁻10 हर्ट्ज और रडार में यूज़ होता है. इंफ्रारेड 10⁻13 यूज इन हीटिंग. ओके, और थर्मल इफेक्ट. यूवी रीजन अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज. ओके, सॉरी 16 नहीं, 15 है ये. ओके, कंपोनेंट ऑफ सनलाइट. एंड विजिबल रीजन जिसको आप देख सकते हैं 10⁻16 हर्ट्ज अराउंड ओनली पार्ट विच आवर आईज कैन सी. ओके, जो आपके कलर जो भी सीन होते हैं हमको, दैट इज द पार्ट ऑफ विजिबल रीजन. डिफरेंट कलर्स इन स्पेक्ट्रम correspond to waves of different lambda and different frequency. Now for the visible region, okay, violet color से लगा करके रेड कलर तक. ओके, तो violet color has maximum frequency about 7.5 into 10⁻14 hertz and the minimum the lambda 380 nm. and the red color has maximum lambda. तो क्वेश्चन आता है कि विच कलर हैज द मैक्सिमम लेमडा और वेवलेंथ. इट इज द रेड कलर 760 nm. इसकी फ्रीक्वेंसी सिमिलरली डिक्रीज हो जाएगी 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. इट मीन जो रेंज है, अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें, दैट इज द रेंज फ्रॉम 4 to 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. और अगर लेमडा के कॉन्सेप्ट में बात करें तो ये है 380 से 760 nm तक. ओके, अरेंज इन ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यू और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा. ओके, ये आपका पूरा स्पेक्ट्रम होगा. इसमें कौन कौन से होते हैं? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेडिएशंस, आईआर, माइक्रो एंड दी माइक्रोवेव्स एंड दी रेडियो वेव्स लास्ट. ओके ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी वेव के बारे में, किसी वेव मोशन के कॉन्सेप्ट में हमको कुछ टर्म्स बहुत नीड है स्टडी करने का. दैट इज दी दीट आर सम टर्म्स. फर्स्ट इज वेवलेंथ. सो व्हाट इज वेवलेंथ? आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक डायग्राम है ये. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए. आई एम जूमिंग दिट. ओके, यू कैन सी इजीली नाउ. सो व्हाट इज द वेवलेंथ? ओके, वेवलेंथ जैसे मूव करती है, सो यहाँ पर इस टाइप से. सो जी जो अपर पार्ट है, इट इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड जो डाउन पार्ट है वो उसको बोलते हैं हम ट्रफ. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस क्रेस्ट, यहाँ से लगा करके, सपोज यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दैट इज लेमडा. और इन द टर्म्स ऑफ ट्रफ, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स the distance between two continuous trough is called lambda. और also we can write these is our lambda. ये जो पूरी लेंथ है, पूरा एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ. okay, crest and trough, it is also called lambda. So what is lambda? Now we can, the distance between two nearest crest or nearest trough is called wavelength, measured in troughs of centimeter. because लेंथ है तो हम लेंथ की यूनिट में इसको मेजर करेंगे. दैट इज सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर एंड एनएम ऑल्सो. दीज आर यूनिट ऑफ लेंथ. ओके, जनरली हम इसमें सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम में इसको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी भी वेव्स पास करेगी, दैट इज नॉन फ्रीक्वेंसी. इसका यूनिट होता है हर्ट्ज. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? इट इज हर्ट्ज.
hertz is means cycle per second. Cycle per second. 1 hertz is equal to 1 cycle per second. And the formula there is lambda nu is equal to distance traveled in 1 second is called velocity. So we can write lambda nu is equal to velocity c, and now we can derive the formula of frequency is equal to c upon lambda. It is very very important formula. Now the next is velocity c. What is the velocity? The distance covered in 1 second by the wave. ये किसी भी यूनिट टाइम में the distance covered in a unit time by the wave. Okay, it is called the velocity. All electromagnetic waves travel in same velocity in vacuum, that is the speed of light. So we can write lambda nu is equal to c. So we know that lambda nu is equal to c. It is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So we can write nu is equal to c upon lambda. So we can check here that nu is inversely proportional to lambda. जब भी lambda increase होगा तो nu decrease होगा. So now next is wave number, that is denoted by nu bar. ऐसे इसको denote करते हैं nu bar, that is denoted by nu bar. The number of wavelength per centimeter per unit length, जो भी उसका number of wavelength रहेगा per unit length में, that is called the wave number. It is reciprocal to lambda. तो nu bar is equal to 1 upon lambda. यूनिट सेम है इसका, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट मीटर में रहेगा. ओके, आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल है, देयर इज एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू कैन चेक हियर. सपोज ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये डिस्टेंस है बेटा आपका यहाँ से यहाँ तक जो है, दैट इज दी 1 centimeter suppose. Okay, so how we can check there, how many lambda are there? There is first lambda, the length of a crest and a trough, first lambda, and this is the second. So we can say there are 2 lambda. Okay, 2 lambda in 1 centimeter. It is the wave number. Next is amplitude A. You can write, okay, the length of the crest or trough is called amplitude and denoted by small a. The height of crest or trough of a wave is called amplitude. It determines the intensity of radiation. Means ये जितना high रहेगा, intensity of radiation उतना ही maximum रहेगा. Next है time period. It is denoted by capital T. Time taken by the wave for one complete cycle or vibration. एक cycle और एक vibration में जितना भी time लगता है एक wave को, that is called the time period. And T is equal to 1 upon nu, measured in SPC. SPC means second, sorry, second नहीं, cycle per second रहेगा. CPS, ओके, साइकिल पर सेकंड. इसको आप करेक्ट कर लेना यहाँ से, दैट इज CPS, साइकिल पर सेकंड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द अर्लीस्ट व्यू ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन. द लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ओके, टर्म्ड एज कार्पल्स ऑफ लाइट. और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या क्या एक्सप्लेन करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये दोनों से एक्सप्लेन हो सकता है, बट कांट एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रेक्शन. यू नो ऑल दैट अबाउट दिस चैप्टर इज ऑल्सो इन योर फिजिक्स. सो एक्सप्लेन बाई वेव नेचर से हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगेन वेव नेचर से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन बोथ नेचर, ये सब मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है. देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे. एक विविध भारती स्टेशन है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रिक्वेंसी. जो ब्रॉडकास्टिंग है वो किस फ्रिक्वेंसी पे है? 1368 किलो हर्ट्ज. कैलकुलेट द लेमडा ऑफ EM रेडिएशन इमिटेड बाई ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर से जो भी लेमडा इमिट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, उसका वो फाइंड आउट करना है. विच पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग. ओके, सो न्यू इज इक्वल टू व्हाट? 1368 किलो हर्ट्ज. ओके, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 to the power 3 हर्ट्ज हो जाएगा. 136 into 10 to the power 3 हर्ट्ज. So we can write it, hertz is second inverse, so we can write 1368 into 10 to the power 3 second inverse. We know that nu is equal to c upon lambda, so lambda is what? C upon nu. So what is the c? 3 into 10 to the power 8 meter per second is the speed of light, and divide by the nu, and you can calculate the answer, that is 293.3 m. Okay, that is the रीजन. अब ये रीजन किससे बिलोंग करता है? ये तो गया उसका क्या? लेमडा. और ये लेमडा किस रीजन से बिलोंग करेगा? दैट इज द रेडियो वेव रीजन. ओके, वी कैन नो दैट विविध भारती स्टेशन से क्या निकलेगी? रेडियो वेव ही निकलेगी ना. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेमडा रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 nm टू रेड 750 nm. एक्सप्रेस द लेमडा इन फ्रिक्वेंसीज. लेमडा को आपको क्या करना है? फ्रिक्वेंसीज में उसको एक्सप्रेस करना है. तो लेमडा ऑफ वायलेट रीजन इज 400 nm. अब इस 400 nm को आपको चेंज करना है, दैट इज न्यू. तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा. बस सी अपॉन लेमडा कर दो. यहाँ से सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, एंड लेमडा क्या? 400 into 10 to the power 9 मीटर. एनएम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, देन दैट विल बी आंसर 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. ऐसे ही आप चेक करो, 750 nm को कन्वर्ट करेंगे तो सेम यही फॉर्मूला और सेम आपके पास आंसर आ जाएगा 4 into 10 to the power 14 सेकंड इनवर्स और
hertz. So range of visible spectrum in terms of frequency is 4.0 into 10 to the power 14 hertz, and violet to red, so 7.5 into 10 to the power 14 hertz. Calculate question number 3. Calculate nu bar means wave number. B in frequency of yellow radiation having wavelength 5800 एंगस्ट्रम. तो फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर. वेव नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा? वेव नंबर इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 5800 into 10 to the minus 10 meter. So nu bar is equal to reciprocal of lambda, so 1 upon lambda. So 1 upon lambda करेंगे यहाँ से, तो 1 upon 5800 into 10 to the power 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.724 into 10 to the power 6 मीटर इनवर्स. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. एंड देन द फ्रीक्वेंसी अगेन न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा. तो इसी फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे. दैट विल बी द आंसर. यू कैन चेक ऑल्सो द आंसर बाय कैलकुलेटिंग. ओके, सो द next topic and very important topic is particle nature of EM radiation. We will discuss in this topic in the next video. Okay, all the best.